And students who are joining from YouTube live, good evening. How are you all? So students who are joining from YouTube, good evening. Kalaburgi students, good evening. Okay, good. So please everyone answer the technical check. Please answer the technical check. Okay, what is this? Okay, Chitradurga students have written. Janvi Chitradurga born to rule. Okay. So students, please let me know. Everyone, please answer it. Yes. Okay. I can see three students haven't answered the technical check. Please answer, students. It would be really, really helpful. Okay. In the meantime, if you face any difficulties during the lecture, okay, please let me know. Yes, Abhay, I do watch, but right now I don't have any time to do anything. Okay. Good. Okay, so 75% people have answered that. Okay, they can see everything clearly. The audio is clear. So I'm ending the poll. Okay. So thank you for answering the poll. So yeah, so we'll be beginning our session. So already 46. So yeah, Ashada, Bagalkot students, Ballari students, Chitradurga students, good evening everyone. Yes, and Davangere, Uttara Kannada, Parth, Sweetie, Trishna and Tirth. Okay, so welcome to today's session. Thank you. So yeah, myself, who am I? I'm Samanvit. Yeah, I'm your physics faculty over here from Avantifellows. And we were talking about what, students? We were talking about work, power, energy. Oh yeah, or work, energy and power. Yes, students, good evening. Good evening, good evening. Okay. So yeah, so water is set. Nice. Now students, so before going to today's session, today's content, just quickly go what we have studied, like what we are going to study in today's class. Okay. The first thing we are going to do is quickly recall everything that we have studied in the last class. Okay. Then at the end of the last class, we talked about something called friction. And we came to know that this friction is a non-conservative force. Yes. So we are going to talk about non-conservative force. Then we are going to talk about what? The difference between conservative and non-conservative force. Then we'll talk about numerical, where it will be asked that whether the force, the given force is a conservative force, where is a conservative force, or a non-conservative force, or a non-conservative force. Then we will be talking about work energy theorem. Okay, students, this theorem is very, very important. Okay, so make sure that you understand it very clearly. Then we are going to talk about proof of work energy theorem. We'll understand what is a proof of work energy theorem, how do we prove it, and also the use of it. Then the summary of today's session. Okay, students. Now, if that is the case, we are good to go. Everyone, we're good to go. So in the last class, what we have studied, students, please let me know. And students joining in YouTube, please make sure that if you have any doubt, I'm available in the chat section. Okay. So don't worry, if you have any doubt, just post it in the chat section. So students, what you have studied in the last class? Very good. Yes, others, please reply. See, if you were in the last class, then you know what we have talked about in the last class. Very good. Yes. Yes. We were talking about what? Conservative forces. Yes. So if that is the case, students, we will start with a quick recall question. Okay. I want you to answer what? Consider the following statement. The first statement says that gravitational force is an example of conservative force. The second statement says that frictional force is an example of non-conservative force. Then which of the following statement is correct? So which of the following statement is correct, students? Please let me know. If you have understand last class, then you will know which of the what statement is correct. Very good. So which is the option? Whether it's option number 1, option number 2, option number 3, option number 4. Okay, Uttara Kannada students, you need to check the answer. Yes, very good. Very good. Very good. Yes. So everyone is answering the okay. Abhay, check your answer. Sweetie, Krishna, Tirth, what is the answer? Did Sweetie answer? Abhay, very good. स्वीटी आपने आंसर ओके ठीक है वो बहुत बहुत आंसर आ गया ना ऐसे टक 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 आ गया आज आंसर तो अरे वेरी गुड वेरी नाइस यस
So see, yesterday we saw that we also proved that gravitational force is what? A conservative force. We already have proved it. And also we saw that at the final of our what session, we saw that friction is a non-conservative force. So if you have understood last class, then what? The option C is correct. This option number 3 is correct. That is what? Both the statement are what? True or correct. Both the statement are correct. Yes, very good. वेरी नाइस. ये बहुत इजी था ना, इसमें कुछ भी नहीं था. अगर लास्ट क्लास समझ में आया, ये तो कुछ भी नहीं था. यस. नाउ सी, इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स, where we took the example of what? Let's say you are over here and there is ice cream parlor, and if you want to go to this ice cream parlor, there are 3 paths: path 1, path 2, and path 3. Yes or no? Now over here I told you that if the applied force is a conservative force, if the force applied over is a conservative force, then what, students? The work done on all these 3 paths, that is, there is a work done on path 1, there is a work done on path 2, and there is a work done on path 3. If what? The work done, if the force is a conservative force, then the work done is same. Yes or no? That is W1 equal to W2 equal to W3 on the 3 paths. And also we came to know that it doesn't depend on the path. है कि नहीं? It doesn't depend on the path. सही है ना? देखो, आपने जो भी पाथ लिया, ये पाथ ले, path 1, path 2 या path 3, it doesn't depend on the path. It depends on what? The only on initial and final position. ये आपका initial position है, ये आपका initial position है, ये आपका final position है. बस काम खत्म. समझ में आया? Yes. And also we talked about closed path work done. Yes or no? Where I told you that, see, I'll be over here and applying a force, a conservative force. अगर मैंने कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई किया, मैं यहाँ से यहाँ मूव करूंगा, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, then we came to know that the work done क्या आ रहा था? Let me know what is the work done for closed path when a conservative force is applied. Conservative force is applied. क्या आ रहा था? Yes, very good. 0 है कि नहीं? हमने कल देखा ना, एक अगर मान लो बॉक्स है एंड आई वांट टू मूव फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, देन फ्रॉम बी टू ए, हम चेक कर रहे थे कि कौन सा, अगर क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हमें आ गया कि जो मान लो ये डिस्प्लेसमेंट एस है और ये डिस्प्लेसमेंट एस है, हमें पता चला कि टोटल वर्क डन आ रहा था 0. क्यों? क्योंकि हम चेक कर रहे थे किसके लिए? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए. ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, है कि नहीं? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है. यस. सो फॉर अ क्लोज्ड पाथ, अगर एक क्लोज्ड पाथ है, मान लो एक क्लोज्ड पाथ है, और अगर यहाँ जो अप्लाई वाला होगा फोर्स, जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, वो अगर कंजर्वेटिव है तो क्या होगा? क्या होगा स्टूडेंट्स? वो वर्क डन 0 होगा. यस, यस और नो? Others, let me know in the chat. किसी और ने रिप्लाई नहीं दिया. Only Parth and Uttar Kannada students has given the answer. Yes. Very good. Very nice. Okay. Good. Very nice. Now, and also we talked that, see, over here you came to know that it is what? It is not necessary. It is not necessary that when displacement is 0, then the work done is 0. Yes or no? मैंने यही बोला, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना, ऐसी बात जरूरी नहीं है कि जो आपका वर्क डन आ रहा है वो 0 है कि नहीं? इट इज नॉट नेसेसरी. व्हाई? आई टोल्ड यू दैट, सी देखो, अगर आपका जो अप्लाइड फोर्स है, अगर आपका अप्लाइड फोर्स कंजर्वेटिव है, तभी आपका वर्क डन 0 आ जाएगा. ये तो एक रूल है, ये सेट है. लेकिन आपका वर्क डन जब 0 नहीं आएगा ना, इसका मतलब क्या है? जो फोर्स अप्लाइड है, जो फोर्स which is being applied is a non conservative force. है कि नहीं? students? Now from there we get into the concept of non conservative force. So what is a non conservative force? देखो, ये definition हम देखेंगे. कल मैंने बोला था, देखो,
अगर मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, एक मास, नॉट बॉक्स, अ मास, a box of mass m and I want to move it from A to B, ठीक है, फिर मुझे उसको मूव करना है B to A, ठीक है, मैंने पहले फोर्स लगाया F, अभी देखो अभी ये मूव हो गया फ्रॉम A to B और आपको पता है कि एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है F, यस और नो? नाउ स्टूडेंट्स इफ दैट इज अ केस एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, तो आपका जो वर्क डन आ रहा है ना वो क्या आ रहा है? लेट मी नो स्टूडेंट्स, जो वर्क डन आ रहा है, व्हाट इज द वर्क डन दैट वी यूज्ड टू गेट फॉर फ्रिक्शनल फोर्स? यस, वेरी गुड, माइनस एफ एफ इनटू एस, यस और नो? दिस वाज द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। अभी मैंने बोला कि मेरा बॉक्स अभी बी में है और मैंने अप्लाई किया फोर्स, उसको ए में लाना है और आपको पता है एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर भी एक्ट कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स इफ दैट इज अ केस, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, तो क्या आ रहा है? फ्रॉम बी टू ए क्या आ रहा है? लेट मी नो, माइनस एफ एफ इंटू एस ही आ रहा है ना, ये दोनों वही हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका जो वर्क डन है वो एफ एस कॉस थीटा है और यहाँ थीटा 180 डिग्री है कि नहीं? इधर भी थीटा 180 डिग्री है, तो दोनों में क्या आ रहा है? माइनस एफ एफ एस, फिर टोटल वर्क डन क्या आ रहा है? माइनस 2 एफ एस एफ एफ इंटू एस, है कि नहीं? ये आपका टोटल वर्क डन। लेकिन यहां आपने अभी देखा जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यू नो दैट हियर हियर द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, है कि नहीं? है कि नहीं स्टूडेंट्स? इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, व्हाट इज हैपनिंग? द वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो भी अभी फोर्स लग रहा है ना, जो भी अभी फोर्स लग रहा है ना, वो क्या क्या स्टूडेंट्स? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कैन आई से द फ्रिक्शनल फोर्स which is a frictional force is a non-conservative force, बोल सकता हूं स्टूडेंट्स? लेट मी नो, कैन आई से दिस और नॉट? बताओ, everyone who is in the chat, let me know. अभय, सुमन, yes, let me know. अर्षदा, बागलकोट स्टूडेंट्स, उत्तर कन्नड़ स्टूडेंट्स, बल्लारी, चित्रदुर्गा स्टूडेंट्स, दावणगेरे स्टूडेंट्स टू, पार्थ, स्वीटी, कृष्णा, let me know, can I say this or not? Yes, okay, very good, very good. Very nice. Others? Okay, good. Now, so what is this non-conservative force? बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है ना वही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बस काम खत्म। अगर किसी ने पूछा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, कि अगर वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है उसको हम क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। एंड ऑल्सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स व्हाट is one which work in which the work depends on the path। अब समझ में आया? देखो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या आ रहा था कि वो क्या डिपेंड नहीं कर रहा था कि कौन सा पाथ ले रहे हो, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ। समझे ऐसे क्यों हो रहा? देखो अगर मैंने एक टेबल ले लिया, ठीक है, मेरे पास एक टेबल है, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा टेबल को अच्छे से बनाऊंगा। एक एक मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, अरे एक टेबल है, ये टेबल अच्छे से नहीं बन रहा है, ऐसे क्यों? ओके, ठीक है, अभी मान लो ये टेबल है, ठीक है, जज मत करो। ओके, नाउ इन दिस टेबल आई हैव केप्ट अ मास एम, मेरे पास मास एम है, ठीक है। अब आई वांट टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर, इसको मूव करूंगा, देन फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, है कि नहीं? कैसे मूव करूंगा? फ्रॉम ए से मूव करूंगा, अभी पहले मास एम है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, है कि नहीं? मुझे ये बताओ, अगर इस पाथ में जो वर्क डन हो रहा है ना वो अलग अलग है ना। देखो इस पाथ के लिए जो वर्क डन हो अलग है क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, इस पाथ के लिए यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, इस पाथ के लिए यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, और इस पाथ के लिए यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं? जो टोटल वर्क डन हो रहा है ना, टोटल वर्क डन, जो टोटल वर्क डन है ना वो डिपेंड कर रहा है अभी, डिपेंड्स ऑन पाथ, है कि नहीं?
क्योंकि हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो डिपेंड कर रहा है कौन सी पाथ आप ले रहे हो, है कि नहीं। अगर मान लो ये छोटा है, ये बड़ा था, इफ द लेंथ इज वेरी मच, इफ इट इज 10 सेंटीमीटर और ये वाला 5 सेंटीमीटर था, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना वो अलग अलग है ना, तो इसलिए अभी पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। सो जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है is depending on path. Yes? Let me know, students. Yes or no? वेरी गुड। इसका मतलब क्या है? इसके मतलब कि जो अगर मान लो इसको मैंने पाथ 1 लिया, ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है, ठीक है। पाथ 1 इज नॉट इक्वल टू पाथ 2, मतलब वर्क डन ऑफ पाथ 1 इज नॉट इक्वल टू पाथ 2। यस? यस और नो, स्टूडेंट्स? एंड ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर अगर फोर्स जो अप्लाई किया है वो नॉन कंजर्वेटिव है, जो अप्लाई किया है वो नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है, एंड यू आर कंसिडरिंग अ क्लोज्ड पाथ, you are considering a closed path, then for a closed path, if there is a non-conservative force, then the work done is not equal to 0. ठीक है? Is it good? Just a second, students. Bear with me. Yes. Is it clear? Good, good. Yes. Okay. Good, good. Very good. Now, if that is the case, students, अगर ये सब समझ में आया ना, तो let us talk about the difference between conservative force and non-conservative. देखो, एक साइड में कंजर्वेटिव फोर्स है, एक साइड में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। एक बोलता है कि वर्क डन इक्वल है, सही है ना? क्यों? क्योंकि पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो पहला पॉइंट वर्क डन इज इक्वल टू वन पाथ इज इक्वल टू सेकंड पाथ। इसमें द फर्स्ट पॉइंट इज जो पाथ वर्क डन ऑफ पाथ क्या कर रहा है, अभी पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो वर्क डन इक्वल नहीं होगा, सही है। सो फिर क्या है, क्लोज पाथ के लिए वर्क डन 0 है एंड क्लोज पाथ के लिए वर्क डन 0 नहीं है। एंड द थर्ड पॉइंट इज द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इसमें फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ। और जो हमने एग्जांपल लिया था वो कौन सा एग्जांपल है? ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और बिटवीन टू चार्जेस आर एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। फिर नॉन कंजर्वेटिव के लिए कौन से हो रहे हैं? अभी हमने देखा फ्रिक्शन, द मेन एग्जांपल वाज फ्रिक्शन। फिर एयर रेसिस्टेंस है, टेंशन है, what? ये सब एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यू कैन राइट इट डाउन, स्टूडेंट्स, प्लीज राइट इट डाउन। Yeah, Sanullah, you can ask the doubt. What is the doubt? Please let me know, Sanullah, what is the doubt? Or you can text in the group also. Yes. Is it clear, students? Okay, good, good, good. Very good. Everyone has written? Everyone has written? See, this is very, very important. Okay. You need to up acha. Okay, you are writing it down. Are you writing it down? Uttara Kannada Chitradurga students? Okay, good, good. Right. Okay. I'm giving 1 minute of time. Okay. You can take your time.
ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा भूख लगी थी इसलिए मैं कुछ खा रहा था. ओके ओके, गुड गुड. Very good. Is it okay, right? I was very hungry, so I was. अच्छा, जेएनवी स्टूडेंट्स, जेएनवी स्टूडेंट्स को गुस्सा आ जाएगा, है कि नहीं? Yes, because they won't got okay. They won't get any dinner. They will be getting dinner at 8 o'clock, right? So how many of you are hungry now? Who is hungry and angry at the same time? Hungry, angry. Is there any JNV students who is hungry now? Can I know? Only hungry. Acha. So yeah. Okay. Acha. Okay. Okay. Yes. Acha. Chitraduga students. People are hungry or angry, or let's say hangry. मतलब hungry और angry एक साथ mix हो गया अभी. अरे तीर्थ. Good one. Good one. Wow. What a line, Tirth. So Tirth is like, sir, we are hungry for your class. What a line, right? Yeah. Tirth is trying to write a very good line. Yes. Acha. Acha. Why Uttarakhand students are angry? Are you angry at me? Okay, Tirth. Why Uttarakhand students are angry at me? Yes, very nice line. Yes, Suman. Yes. Tirth. Very nice line. Okay. सही था, अच्छी बात है. तो एक काम करो ना, कल से everyone has to tell a line to me. अच्छा ಬೈಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಯಾರಿಂದ? ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿಂದ ಬೈಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಯಾರು ಬೈದ್ರು? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ, ಬೈದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಬೈಯುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎನಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಬೇರೆ ಯಾರು ಬೈಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೈ, ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಸ್ವೀಟಿ. ಓಕೆ, if that is the case, let's move ahead now. Now, if that is the case, students, now let us try to solve numericals. Okay, try to solve numericals. So the first numerical, what does it say? Let's say there is a numerical that's asked you. The numerical says, question number 1, that if f is equal to x into I cap plus y into j cap is आपका जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है. Okay, Parth, I'll pakka teach you. Okay, I'll pakka teach you. That is what one is. Option as given as is a conservative force. Okay, is it conservative or is it non-conservative? Is it conservative? Is it non-conservative? Depends on x. Depends on x. And what? Depends on y. Parth, after this question, let us try to understand Kannada. Okay, I'll teach you one word. Okay, is it good? Now, if these type of questions are given, what will you do, students? How can you solve this? Have you got any idea? Has anyone got any idea? अगर हमें ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, अगर उन्होंने बोला कि फोर्स दिया है, ठीक है, हमें बोलना है कि वो कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, डिपेंड्स ऑन एक्स है, डिपेंड्स ऑन वाई है, फिर क्या होगा? क्या हो सकता है? थिंक क्या हो सकता है? बताओ, कोई बता सकता है? एनीवन इन जेएनवी स्कूल्स? वाले से अर्शदा, स्वीटी, तृष्णा, कैन एनीवन से? ओके, ऑप्शन 2 बोल रहे हो क्या? 3 and 4? अच्छा, 3 and 4 बोल रहे हो. नहीं, ऐसे तुक्का मत मारो, ठीक है? तुक्का से इन माय क्लास तुक्का नहीं है, ठीक है? फिजिक्स है जहां आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है? अब ओके, इज गुड, ठीक है? देखो, आपको अगर इस टाइप क्वेश्चन दिया है ना, तो कैसे, हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है? So please note it down, students, everyone, how to solve these type of questions. There is a method to solve this type of question. ठीक है? The method is, if you need to check, see, if the given
फोर्स, जो फोर्स दिया है, मतलब जो देखो इसमें एक फोर्स दिया है ना, अगर ये फोर्स दिया है, ओके, इज कंजर्वेटिव, अगर ये कंजर्वेटिव है, ठीक है, देन देर आर सर्टेन कंडीशंस that you need to satisfy. Okay, first thing is what? First thing is convert the force into the following format. जो आपका फोर्स है ना, उसको एक फॉर्मेट में बदलो. वो कौन सा फॉर्मेट है? वो फॉर्मेट है F इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप. ठीक है, ये पहला मेथड था. ठीक है, इफ द फोर्स गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव, आपको पता नहीं है, देखो अभी आपको पता नहीं है, आप एक एज्यूम कर रहे हो. ठीक है, आपने एज्यूम करिए कि अगर ये कंजर्वेटिव है, तो एक काम करो कि फर्स्ट कन्वर्ट द फोर्स इनटू फॉलोइंग फॉर्मेट. ये पहले से ही कन्वर्टेड है ना, ये आपको पता है, ये एफ एक्स है और ओके ये एफ वाई है. ठीक है, नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप इज स्टेप 2. जो आपका स्टेप 2 है ना, वो क्या बोलता है कि आपको 3 कंडीशन चेक करना पड़ेगा. वो कौन सा कंडीशन है? वो 3 कौन सा कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन इज del एफ एक्स बाई del वाई इज इक्वल टू del एफ वाई डिवाइडेड बाई del एक्स. देखो आपने क्या किया, पहले एफ एक्स को y से डिफरेंशिएट किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन. फिर आपने क्या किया, यहाँ y है ना, तो यहाँ एफ वाई करो, और यहाँ x है ना, सो dx करो, डेल्टा x करो. ठीक है, समझे? सॉरी, डिड यू गेट द फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स? डिड यू गेट द फर्स्ट स्टेप? यस. सेकंड स्टेप कौन सा कंडीशन से? एक और कंडीशन. अब आप करो, देखो आपके पास x y z है, फिर आपने पहले x एंड y से कंपेयर किया, अभी y एंड z से कंपेयर करो. क्या करो, del एफ वाई डिवाइडेड बाय del z इक्वल टू, फिर क्या आपने लिखना पड़ेगा, del एफ जेड डिवाइडेड बाय del y. सही है, ये एक और कंडीशन है. और तीसरा कंडीशन क्या होगा, अब z और x में कंपेयर करो. क्या, del एफ एक्स डिवाइडेड बाय del z इक्वल टू del f क्या z होगा डिवाइडेड बाय del एफ एक्स, सॉरी del x. ये 3 कंडीशन आपको सेटिस्फाई किया ना, देन स्टूडेंट्स यू कैन से दैट द फोर्स इज कंजर्वेटिव. समझे? इज इट गुड? व्हाट आर द कंडीशंस? देखो अगर ऐसा एक इक्वेशन दिया है, आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में. ठीक है, इस फॉर्मेट में ये पहले ही कन्वर्टेड है. फिर आपको चेक करना पड़ेगा ये 3 कंडीशंस. व्हाट आर द 3 कंडीशंस? ये पहला वाला, सेकेंड और 3. ठीक है, इज इट गुड? लेट मी नो ऑन स्टूडेंट्स, इज इट गुड? everyone let me know with a thumbs up or anything on a message or something. Very good, Kabay, very good. Yes, very good. Now if that is the case, let us try to solve the problem. Now I am trying to solve the problem. ठीक है, पहले स्टेप क्या था, कन्वर्ट इनटू एफ एक्स एफ वाई. यस और नो? पहले ही दिया है, जो फोर्स दिया है वो क्या दिया है, एफ इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. ठीक है, आपको पता चला आपका एफ एक्स है, ये एफ वाई है. और अभी आपको क्या 3 कंडीशन चेक करना पड़ेगा. पहले कंडीशन क्या था, del एफ एक्स बाई del वाई इज इक्वल टू del एफ जेड डिवाइड बाई, सॉरी एफ वाई डिवाइडेड बाई del z, सॉरी del x. ऐसा नो? ये पहला कंडीशन था. देखो अगर मैंने यहाँ अप्लाई किया, ये क्या है, एफ एक्स जेड है, x है, सो del x डिवाइड बाई del y इक्वल टू del, ये क्या था, एफ वाई, सो y है डिवाइड बाई del x. मुझे ये बताओ, अगर मैंने x को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? लेट मी नो, क्या आ जाएगा? आंसर क्या है? इफ आई डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू y, वेरी गुड, तो 0 आ जाएगा. और अगर मैंने y को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है कि नहीं? ये आपका पहला वाला आंसर आ जाएगा. वेरी गुड. अभी दूसरा कंडीशन क्या था, del एफ वाई डिवाइडेड बाई del z इक्वल टू del एफ जेड डिवाइडेड बाई del y, है कि नहीं?
और अभी आपको पता है कि जो fi है वो तो 0 है कि नहीं. नाउ हियर मैं लिख सकता हूँ डेल fi क्या है, y है डिवाइड बाय डेल z इक्वल टू डेल ऑफ fz 0 है डिवाइड बाय डेल y. मुझे ये बताओ डेल y रिस्पेक्ट टू डेल z क्या है. अगर मैंने y विद रिस्पेक्ट टू z किया तो क्या होगा, 0 है. और ये भी 0 है क्योंकि आप ये कर रहे हो. ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. Then the third condition is, what is that condition? Del fx divided by del z equal to del fz divided by del x, है कि नहीं. और ये fx क्या है, fx is x divided by del z equal to del fz क्या है, 0 divided by del x. x with respect to z क्या होगा, अगर मैंने डिफरेंशिएट किया 0 हो जाएगा. वेरी गुड, विच इज इक्वल टू 0. अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना. 3 कंडीशंस are satisfied. तो क्या मैं बोल सकता हूं जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है. yes, very good. okay, Chitradurga students, let me know from where should I explain you. Let me know students, from where should I explain you. From start. okay, देखो, the first thing is your question will ask अगर मैंने और ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, there is a force ಆಯ್ತಾ, if f is equal to xi cap plus yj cap is, ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರು. ಓಕೆನಾ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ they give 4 options, whether it's a conservative, non-conservative, depending on x or depends on y. ठीक है, these 4 options. Now how to solve this? yes abhay, yes. So how to solve this? See over here you need to check kya. See, the method is, if the given force is conservative, we are assuming that if the given force is conservative, then the first step that you need to do is convert the force into following format. इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. ठीक है ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ वो ಅದು ಇದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ these 3 conditions. That is what one. See, ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ x y z ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಫ್ರಮ್ x to y, y to z, then z to x. ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಂತ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, del fx by del y equal to del fy by del x. ಹೇಗೆ, ಈಗ ನಾನು x ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆನಾ, x ಅನ್ನು y ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ y ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ fy ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯಾವುದು fy ಯಾವ್ದುಂಟು ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುದು x ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನೋಡಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾನು ಎಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನೀವು x ಮತ್ತೆ y ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ y ಮತ್ತೆ x ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ z ಮತ್ತೆ ಈಗ fy ಅನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ z ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ fz ಬರಬೇಕು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಹೌದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ z ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ fz ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ y ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ fy ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ fx ಇದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ fx ಅನ್ನು fy ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ಈಗ fx ಅನ್ನು fz ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಎಸ್, ಈಗ ಇದನ್ನ del z ಬೈ x ಅನ್ನು ಯಾವುದು del z ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, fz ಅನ್ನು ಯಾವ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, del x ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ fx equal to fy ಬರೀರಿ. So you can do something like this for shortcut. fy equal to fz, write fz, and write fx equal to fz. Now what, do the differentiation, partial differentiation. Okay, do the partial differentiation. Now you know that if there is y, differentiate with respect to y. If there is x, differentiate with x. Here also, if this is z, differentiate with the z. If this is y, differentiate with y. And also here, if this is z, differentiate with z, and if it x, differentiate with x. Got it? Let's say this is shortcut method, like to remember. What do? You write fx equal to fy, fz equal fy equal to fz, then fz x equal to fz.
ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರ್ದ್ರಾಯ್ತು. Students, let me know, is it clear? Students, let me know. Okay, others, let me know. Okay, good. Okay, good. Others, is there any doubt? ಯಾರಿಗ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಪಾರ್ಥ್, ಸ್ವೀಟಿ, ಕೃಷ್ಣ. Okay. Rohit, we can go talk about it in the let's say. Okay, Rohit, there is a Avanti Live. Let's say, I guess 1 or 2, Avanti Live 1 or Avanti Live 2. Over there, the photoelectric effect is going on. Okay, the session is going on. Please check it. Okay, is it good, Rohit? Very good. No doubts. Okay, very nice. If that is the case, students, if that is the case, then can you solve another numerical? Is it possible for you to solve another numerical? Same condition apply करना है, लेकिन check करना है आपको बस. ठीक है? The question says f is equal to 3 into y cap, y I cap plus 3 into x into j cap. Now check whether it is a conservative force or a non-conservative force. Check whether it's a conservative or a non-conservative force. Okay, same question. See, also over here we got the answer as what? It is a conservative force. Yes or no? Why? Because we got that all these three conditions. Okay, all three conditions that is come out to be equal. Yes or no? First condition satisfied, second condition satisfied, third condition satisfied. If three conditions satisfied, then we say it is a conservative force. Conservative force. Yes? Yes or no? Uttarakhand students, very good. So over here we got the answer as what? 0 0 0 0 or ek aur aa raha hai 0 0. So similarly, try to do this question and let me know whether it's a conservative force or a non-conservative force. Let me know, students. Okay, I'm giving you 3 minutes of time to answer it. I'll just launch the stopwatch. Okay. Yes, the stopwatch is running. Please check. Okay, there is a mixed answer. Check your answer once, students. Check your answer. पक्का? देखो, ये मत कहो कि don't check whether these three conditions are equal to each other. मैंने कभी नहीं बोला आपको ये तीनों इक्वल होनी चाहिए. मैंने ये नहीं बोला. मैंने बोला कि ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन सेम होनी चाहिए, ये कंडीशन इक्वल होनी चाहिए, ये कंडीशन इक्वल होनी चाहिए, बस सेटिस्फाई होनी चाहिए. ऐसे मैंने कभी नहीं बोला दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है, मैंने ये ठीक है. हाँ, see, always remember that. Don't see, I knew when you said it is a non-conservative force, not only Parth, other students, Chitraduga students also, I came to know that what you assumed. Okay, you can't assume that because I never said. The condition says that. See over here,
दिस इज वन कंडीशन, ये एक और कंडीशन है, और ये एक और कंडीशन है। ये तीनों कंडीशन अलग अलग है। ये तीनों कंडीशन आपस में इक्वल होनी होनी चाहिए, ये किसने बोला? कभी नहीं बोला। ये कंडीशन अपने आप ही इक्वल होनी चाहिए बस। तो मैंने वही चेक किया ना, ये देखो ये कंडीशन सेम सही हो रहा है, ये कंडीशन सही हो रहा है, ये कंडीशन सही हो रहा है, कोइंसिडेंटली इट इज कमिंग टू बी जीरो, बस और कुछ नहीं। हाँ पार्थियस, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये नहीं है ना वो नॉन कंजर्वेटिव है। हाँ यस, बट द कंडीशन उसमें जो फर्स्ट कंडीशन आ रहा है ना, इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट इक्वल। Who is it? Okay, others. Ballari students, check your answer once. Now I have told you. Tirth, very good. Abhay, check your answer. Ballari students, Uttarakhand students, very good. Parth, check your answer. Suman, check your answer. Very good. Others? Last 1 minute. YouTube live students, is there any doubt? Let me know. तीर्थ स्ट्रगल किस में, किस चीज में? देखो, in life, okay, I wouldn't say that it's a struggle. Like, see, I have faced lot of, let's say, कैसे बताऊं, हर्डल्स, ठीक है। लाइफ में हर्डल्स बहुत कुछ आया है, ठीक है। उस हर्डल्स की वजह से मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, ठीक है, बहुत कुछ ज्यादा करना पड़ा। तो इट्स लाइक एवरी पॉइंट ऑफ माई इट्स बीन अ लर्निंग स्टेज। सी, स्ट्रगल होगा अगर आपने कुछ उससे सीखा नहीं है, ठीक है, स्ट्रगल उसको बोल देते हैं। लेकिन मैंने हर हर्डल्स में कुछ ना कुछ तो सीखा है, तो वो एक स्ट्रगल नहीं होगा, ठीक है। देखो, मुझे लग रहा है कि ठीक है जो आप बोल रहे हो ना, जो स्ट्रगल है ना, ठीक है, लेकिन आपकी जब आप वो कुछ एक, जैसे एक पीरियड आता है ना, उस टाइम आपको ऐसे लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है लाइफ में, लेकिन आप उससे सीखते हो ना, तब वो स्ट्रगल नहीं बनता, वो बेसिकली एक हर्डल था जो आपने पार किया, है कि नहीं? तीर्थ, कुछ हो गया क्या तीर्थ? यू वांट टू आस्क समथिंग और यू वांट टू शेयर समथिंग? ऐसा कुछ है जो आप शेयर करना चाहते हो या बताना चाहते हो? यू कैन शेयर इट, ओके। आराम से बात कर सकते हैं, ठीक है। यस, बात, yes, yes, you can freely tell to me, okay. Yes, now talking about the question. Now see, over here the question says f is equal to 3 what 3 y I cap plus 3x j cap। तो ये क्या हो गया? ये fx हो गया, ये fy हो गया। फिर आपका पास जो पहला कंडीशन था वो क्या था? वो था del f, just a second, what is the condition? The condition is del fx divided by del y equal to del fy divided by del x, है कि नहीं? तो ये कंडीशन में क्या आ रहा है? ये 3x 3y है, ये 3x है, तो क्या कंडीशन आ रहा है? 3 इक्वल टू 3 आ रहा है ना, है कि नहीं? यस और नो स्टूडेंट्स? बिकॉज यू आर डिफरेंशिएटिंग y 3y विद रिस्पेक्ट टू y, सो 3 आ जाएगा, और 3x को क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये कंडीशन ठीक है, ये कंडीशन इक्वल आ गया। सेकेंड कंडीशन क्या है? डेल एफ क्या? y डिवाइड बाय डेल z इक्वल टू डेल एफ z डिवाइड बाय डेल y। सो इस कंडीशन में क्या आ रहा है? देखो, आपको पता है ये कंडीशन क्या है, ये 3x है और ये 0 है, तो क्या आ जाएगा? ये 0 इक्वल टू 0, सही है, ये भी कंडीशन में सेटिस्फाई हो गया, है कि नहीं? फिर आपका जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है? डेल एफ एक्स डिवाइड बाय डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड डिवाइड बाय डेल एक्स।
है कि नहीं? और आपको पता है कि डेल एफ एक्स क्या है, 3x है कि नहीं? सॉरी 3y है, 3y है, और ये 0 है, फिर क्या आ जाएगा, ये 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, तीन कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया ना, सो कैन आई से द फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, a conservative force? Yes or no, students? Let me know in the chat. Students, let me know. Is it clear or not? Uttarakhand students, Davangere, Chitradurga, Ballari, Bagalkot, Harshada, Abhay, everyone, Sweetie, Tirth, Krishna, Parth also. Okay, very good, very good. And Tirth, is there any doubt? Let me know. You want to share something? You want to tell something? Yes, very good. Okay. हाँ, Suman, wait. Suman, the thing is, we want these two conditions to be satisfied. मतलब ये कंडीशन जो है और ये कंडीशन जो आ रहा है, मतलब मान ले अगर यहाँ 3 आ गया और यहाँ 4 आ गया, फिर क्या 3 इज नॉट इक्वल टू 4, तब आप बोल सकते हो कि ये क्या है, इसा नॉन कंडीशन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा नहीं है कि आपको कभी नहीं बोला कि ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, मैंने ये कभी नहीं बोला ना सुमन, मैंने कभी बोला और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, कभी बोला और ये ऐसा इक्वल होनी चाहिए, मैंने ये कभी नहीं बोला। मैंने बोला कि कंडीशन इक्वल होनी चाहिए। अच्छा वैसे थी तो इज इट गुड सुमन? सुमन इज इट क्लियर? सुमन पक्का ना, ऐसा कुछ डाउट नहीं है ना, पक्का क्लियर है? ठीक है, ओके वेरी गुड। If that is the case, students, I'm moving ahead. Now, if that is the case, here is another question. Now check whether this force is a conservative force or a non-conservative force. Check करो, check करो. Is it a conservative force or a non-conservative force? And in the meantime, please answer the NPS poll also. Okay, there is NPS poll, so please answer the NPS poll. NPS poll को भी answer कर दो. Please let me know how is my class. Okay, and everyone has to answer the NPS. Naresh, is there any doubt? Is there any doubt? Please answer the NPS. Everyone has to answer the NPS. Okay. And in the meantime, please solve the question also. Very good, very good, very good. अच्छा मुझे ये बताओ, आपको मेरी क्लास समझ में नहीं आता है क्या? हर मतलब हर टाइम समझ आता है कि नहीं आता है? और जो कॉन्सेप्ट मैं बोलता हूँ वो आपको समझ में आता है? मतलब ऐसे स्टूडेंट्स है कि उनको लग रहा है कि मैं कॉन्सेप्ट सही से नहीं सिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ है स्टूडेंट्स? प्लीज लेट मी नो। अच्छा नहीं नहीं, जनरल जनरल पूछ रहा हूँ, जनरल। ठीक है, see if you feel that I'm not solving your doubt, okay, clearly, please let me know. Okay, please let me know. Okay, see you are saying over here, acha Trishna, okay okay, like is it Trishna, is it the way of telling is not understandable or the concept is not understandable? Trishna, let me know, आपको क्या समझ में नहीं आता? अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा है क्या? अच्छा ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नहीं, आई वांटेड टू नो, Krishna, let me know, okay? Should I change the way of teaching or something? Okay. In the meantime, I'll solve the problem, okay? The problem says, see, f is equal to 3y plus 4x. देखो, ये fx है, ये fy है.
तो हम पहला कंडीशन चेक करेंगे, वो क्या है, del fx डिवाइड बाय del y इज इक्वल टू del f y डिवाइड बाय del x. अच्छा, okay, thank you everyone who is saying that I'm teaching well. But yeah, there are people who say that I mean, they don't understand my concept. I don't explain the concept always. That is how. ठीक है, कोई नहीं. Now, when you're checking it, see over here, fx is what? 3y, and this is what? 4x. When you do the differentiation, you get 3 equal to 4. And this is basically what? Not equal, yes or no? From here, the condition is not satisfying. Condition is not satisfying. So can I say the force is non-conservative force, is non-conservative force? बोल सकता हूँ? सही है, सबने सॉल्व किया. वेरी गुड, वेरी गुड. यस, वेरी गुड. Sir, he can't. Okay. Yes, Abhay, very good. Yes. If the first condition is not satisfied, don't check the other condition. बस वही रोक दो. Okay, everyone. So whenever if there is ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲದ condition satisfy ಆಗದಿದ್ರೆ, first condition satisfy ಆಗಿದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ? You no need to solve for every condition. Okay, very good. Krishna, okay. Acha. Okay, the concept is not that hard, Krishna. Make sure that, see, you learn limited. Okay, no need to hurry and all. Nothing is needed. Take your time. Take your time to understand the concept. It will be okay for you. Don't worry about it. Okay. Arey, Uttarakhand students, thank you. Yes, very good path. Okay. And also there is one student who hasn't answered the NPS. Please answer the NPS. Whichever the student is, please answer the NPS. Okay. Yes, very good. Now, if that is the case, students, then here is a homework question for you guys. Here is a homework question for you guys. You need to try to solve this question. Okay. You need to try to solve this question. The question says, okay, a force F equal to I cap plus 3y j cap, okay, acts on a body, okay, and follows the path as shown. Follows the path as shown. Calculate the net work done. Okay, so the homework says this, and the path that it is taking is, the path taken by it is I'll draw the path, just a second. The path, here is a path that is O, from O to A to B to C. Okay, over here, this is the path that is taking, and the let's say positions are 0 A 0, A comma 0, and 0 comma 0. Okay, so see, I'll give the options for you. I'll give the options also. Option A is 3A, option B is minus 3A, option C is 0, option D is 1 by 3A. So please try to solve this. Okay, 1 by 3A. Yes or no, students? Very good. Okay, I'm ending the poll. Okay, thank you for answering the poll. Yes. Is it good? Should I proceed ahead? Have you written the question? Everyone has written the question? Yes. Okay, Naresh, thank you. Very good. Path, very good. Very good for answering. Now, if that is the case, students, then what we are going to see, that is that's all for today's session, students.
but we are actually going to talk about work energy theorem. And students, this is an very important concept. Okay, very important concept. The thing is, in order to understand, understand what this work energy theorem, we have to understand kinetic energy. What is kinetic energy, students? Can someone say how this kinetic energy comes into picture? Can anyone say? Ha. If the object is in motion, then we say that the object has some kinetic energy. Students, it will be updated. Okay, it will be updated soon. You will be getting the syllabus for this week test. Okay, don't worry, it will be shared in the WhatsApp groups. Yes, and it will be notified to the Avanti coordinator over there. Okay, don't worry. And you know that the kinetic energy is what? Half mv square. Yes, yes, very good, Davangere students. So these are the two things that you need to understand. Okay, okay. Now, students, before ending this today's session, I want to ask one question and end. Okay, end the session. The question is: does kinetic energy depend on frame of frame of reference? In tomorrow's class, I want the answer of. Okay, does the what? Does the kinetic energy depend upon frame of reference? Okay, Davangere students, we'll talk about it in tomorrow's class. Okay, and YouTube live students, that's all for today. If you have got any doubt, you can ask. Okay, and also students, in the meantime, let us talk about the summary of today's session. Yes, what and all did we talk about? Yeah. Okay, thank you for attending. The first thing we talked about what? It was about what, students? What did we talk about? Do you remember what did we talk about? Path, what is it? I'm not able to understand. What was the first thing we talked about? It was about non-conservative force. Very good. It was non-conservative force. Yes, we came to know that work done by path 1 is not equal to work done by path 2. What does it mean? It depends on path. It depends on path. Yes or no? The work done depends on the path. And Acha, Gujarati mein, nice. Okay. Then we talked about what? Then we talked about, yes, difference between non-conservative force and a conservative force. Yes. Then we talked about numericals. We saw numericals. And also we had a glimpse of work energy theorem. Yes or no? And we had a glimpse of what? What is the glimpse? Work energy theorem. In tomorrow's class, we'll be talking about this. Yes or no, students? And thank you for attending today's session. If you have any doubt, please feel free to have a contact with me. Thank you for attending, students. Take care, bye-bye, and keep loving physics, okay? And also keep studying physics. Okay, students, take care, bye-bye. Yes.